Hello class 10 students, welcome all of you in this online class. This is Firdaus, I am your math teacher. Today I am going to solve exercise 4.2. In our previous session, we have completed question number 1 and question number 2. So today I am going to solve question number 3, 4, 5 and 6. So without any further ado, let's start our class. Question number 3. In question number 3, here you have, that is, find two numbers whose sum is 27. Find two numbers whose sum, दो नंबर है जिसका सम क्या है 27 है, एंड द प्रोडक्ट इज, सम 27 है और प्रोडक्ट क्या है 182 है. सो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो कैसा है ये वन वेरिएबल का है. So let the one number be x and other number be 27 minus x. ठीक है, अगर एक 13 है तो दूसरा क्या आएगा 14 आएगा. तो इस तरह से, ठीक है, सम है तो माइनस करके ही आना है. ठीक है, ध्यान देना अच्छे से. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज x इंटू 27 माइनस एक्स इज 182. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 27 इंटू एक्स, 27x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हियर यू हैव minus 182 equal to 0. Now take a minus common, so x square minus 27x and plus 182 is equal to 0. माइनस मैंने कॉमन लिया यहाँ पे. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट. नाउ फैक्टराइज दिस. 182 1 जा 182, 2 9 जा 2 1 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 13 1 जा. So here you have two factors, that is 13 and 14. X square minus 14x minus 13x plus 182 is equal to 0. So x minus 14, 13 common here from this, x minus 14 is equal to 0. So now x minus 14, x minus 13 is equal to 0. So now from this x is equal to 14 and 13. These are the two numbers. अगर आप 14 रखते हो, अगर वन नंबर 14 होगा तो अदर नंबर 13 होगा, और अगर अदर वन नंबर को 13 रखते हो फिर अदर नंबर क्या जाएगा 14 है. इस तरह से आपको आंसर 4 ग्रुप पेयर में आंसर हो सकता है ना. इफ़ वन नंबर इज 14 है ना, देन अदर नंबर इज 13 है ना. 27 माइनस 14 करो, और अगर ये 13 रखते हो तो ये 14 आएगा. तो इस तरह से आपका आंसर. ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, सम ऑफ हुज स्क्वायर. सो लेट द टू consecutive positive integers are x, x plus 1, x or x plus 1. Now according to question, sum of whose square, like this, sum of whose square, ठीक है, is gives you 365. So now x square plus a plus b whole square, that is a square, plus 2ab, that is 2x, and plus b square, that is 1, is equal to 365.
From here x square plus x square, what? 2x square and plus 2x. Now 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0. Now take a common 2. X square plus x minus 2 1 2, 2 to 16, 2 to 4 is equal to 0. So x square plus x minus 182 equal to 0. Already we have find the prime factor of 182, the two number, that is 14 and और 13. अगर आप 14 और 13 को माइनस करते हो तो आपका यहाँ पे 1 मिड टर्म आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x है ना, माइनस 182. नाउ x प्लस 14, x plus 14 is equal to 0. So from here what you get, it is x plus 14 and x minus 13 equal to 0. So from here x is equal to minus 14, यहाँ से आपका x equal to minus 14 आएगा. Not possible because in question you have to find the positive integer and the answer is here negative. So this is not possible. So x equal to 13 is possible. So first one is x and second one is what? 14, 13, 14. So hence two positive integers are 13 and 14. Okay. So this is your required solution of question number 4. Now question number 5. The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. That is, altitude, that is height of a right triangle is 7 cm less than its base. That means altitude is dependent on base. So we have to take let the base be x and altitude be what? 7 cm less, that is x minus 7. Now if the hypotenuse, okay, the hypotenuse is equal to 13 centimeter. Okay, so find other two sides. We know that what we know that what, that is a hypotenuse in a right triangle. Hypotenuse square is equal to the base square plus altitude square. So hypotenuse is what? 13 square is equal to base, that is x square, and plus altitude, that is x minus 7 square. 13 13 ja 169, x square plus x square minus 2 7 ja 14x. फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 49. नाउ x स्क्वायर व्हाट? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 इक्वल टू 0. So here you have 2x square minus 14x, 9 out of 9 0, 6 out of 4 2, 120 equal to 0. Now take a common 2 here. X square 7x and minus 60 is equal to 0. So now x square minus 7x minus 60 is equal to 0. Okay. So let's solve it. 61 is 60, here is nothing, the coefficient is 1, 61 is 60, and the factor of 2 factor of 60, that is 12, 5, the 60, and when you subtract 12 minus 5 you will get the 7. So x square minus 12x plus 5x minus 60 is equal to 0.
So now x minus 12 plus 5, x minus 12 is equal to 0. So x minus 12 and x plus 5 is equal to 0. So from here what you get, that is x is equal to 12 and x is equal to what, 1, that is minus 5. So minus 5 is not possible because जो साइड वगैरह है आपका माइनस में तो नहीं आता है, not possible. So hence what, base is equal to 12 centimeter and altitude is equal to 12 minus 7, that is 5 centimeter. Okay, so question number 6. In question number 6 you have given that is a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. मतलब किसी एक दिन कुछ पॉटरी यानी कि जो मिट्टी का सामान है वो बनाता है. It was observed on a particular day that the cost of a production of each article, each जो कॉस्ट है, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, वन आर्टिकल का, वो क्या होगा, वाज 3 मोर देन, 3 ज़्यादा होगा, ट्वाइस, 2 गुना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लेट हियर, दैट इज लेट द number of articles produced on that day is equal to x, and the cost of each article be what, twice the number of articles produced that day, that is twice of x, and 3 more than plus 3. This is the cost of 1, and total number of article is this, and cost of per article is this, so that total cost, that is number of article into per cost, gives you 90 rupees. Okay, so now 2x square plus 3x is equal to 90, and 2x square plus 3x minus 90 equal to 0. Now let's find the इसको फैक्टराइज करना है और फिर निकाल लेना है. ओके देन क्लास विल नाउ इन आवर नेक्स्ट सेशन विल start our third chapter 4.3, that is which is based on the method of completing the square. Okay then, thank you.